Ashra Mubashara, the ones who were given the glad tidings of paradise during the lifetime of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. ये वो, and that is why they exceed everybody in terms of the Prophet's followers in honor and respect. Because they were given the good news of paradise during the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and that is why they are known as Ashra Mubashara, the 10 best companions. तो इनके ऊपर 5 क्वेश्चंस पास पेपर्स के अंदर कैसे आए, लेट्स ट्राई टू रिवाइज दैट. Write an account of the life of the Holy Prophet's companion Hazrat Abu Bakr during the Prophet's lifetime. Write an account of the main events of Hazrat Abu Bakr during the life of the Prophet. तो आप समझ लें कि जो 10 कंपेनियंस हैं, उन 10 कंपेनियंस में से अबू बकर, उमर, उस्मान, अली पे 10 मार्क का आइसोलेटेड 10 मार्क का क्वेश्चन आया. सो वी विल डिस्कस दैट एंड देन वी विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द कंपेनियंस. तो आउट ऑफ द 5 क्वेश्चंस दैट वी हैव टू डू टुडे, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है जो कि जून 2020, जून 2018 एंड नवंबर 2014 में आ चुका है. तो आप अगर इस आंसर को लिखना शुरू करेंगे तो आप हज़रत अबू बकर की डिटेल्स बताना शुरू करेंगे कि ये 573 मक्का में पैदा हुए, बनो ताइम की टाइप को बिलोंग करते थे. इसके अलावा इनके फादर का नाम था उस्मान बिन आमिर, जिनकी कुनियत थी अबू कहाफा, और उनकी मदर थी सलमा बिनते सखर. हजरत अबू बकर हुजूर के पैगाम नबूवत के आगाज से पहले he was a successful merchant known for his trade dealings, and he also had knowledge of genealogy and poetry. He was originally named Abdul Kaaba, the servant of Kaaba, but the Prophet ﷺ changed it to Abdullah. He became one of the richest men in Makkah through cloth trading. ये हो गया इनकी सर्विसेज बिफोर इस्लाम. फिर जब हुजूर ने पैगाम नबूवत का आगाज किया, so the 4 people who accepted Islam was Khadija, Ali, Zaid bin Haris and Abu Bakr, but he was the first male adult outside of the family to accept Islam. He helped spread Islam by preaching to his friends. So Usman bin Affan, Zubair bin al-Awwam, Saad bin Abi Waqqas accepted Islam because of his efforts. Hazrat Abu Bakr also used his money to help the Muslim community by freeing slaves. He also, the Prophet ﷺ praised him for being the more compassionate. फिर आप बता सकते हैं वाक़या मिराज में he was the first one to testify the वाक़या मिराज on behalf of the account of the Prophet ﷺ, and that is why he was known as Siddiq. He went with the Prophet ﷺ from Hijrah to Makkah to Medina and stayed in the cave of Sor for 3 days. The Prophet ﷺ called him his companion in the cave and at the fountain of Sor and the fountain of Qasr. Medinan life mein, it was Hazrat Abu Bakr who bought the land for Masjid Nabwi. His daughter Aisha was married to the Prophet. He fought in many battles like Badr, Uhud, Hunain, and Tabuk, etc. He also protected the Prophet ﷺ at Uhud and cleared up the rumors of his demise. He was also a part of the Treaty of Hudaybiyah as a signatory. During the Tabuk expedition, he gave all his wealth. When asked about what he had left for his family, he said, I have left for them Allah and His Prophet. He was the first Amir Hajj for pilgrimage. Abu Bakr also led the Prophet ﷺ जब इल थे तो उनकी जगह 17 नमाजें हजरत अबू बकर ने पढ़ाई, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिमाइस के बाद it was him who comforted the Muslims and brought them to face the reality by reciting a verse from the Quran that many messengers before Muhammad were killed or were slain. If Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is killed, will you turn back on your heels? Through this ayat, people started to realize the tragedy that had befallen before them. So Hazrat Abu Bakr was the one who brought these people to face the reality that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is dunya se parda farma gaye hain, zahiri parda farma gaye hain. So this is regarding Hazrat Abu Bakr. Let us now move on and discuss some of the part B's. अगर आपको स्पीड के हवाले से ऐसा लगे कि there's a lot of information overload that is happening, so do let me know and I will stop it. So
You can talk about Hazrat Abu Bakr used his wealth to help others. How can Muslims follow his example today? तो आज के दौर में हम अपनी wealth को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? So we can fund clean water projects such as building wells in areas where access to water is difficult, like deserts. We can help with medical needs such as hospital bills and expenses. We can support orphans' welfare, such as providing food and education. And we can promote community kindness, such as donating to charitable causes. तो अगर हम ये सारे काम करेंगे इंशाल्लाह तो हमारे लॉयल्टी हमारी वेल्थ को हम फॉलो कर सकते हैं। दूसरा सवाल है कि आज के दौर में हम वफादारी कैसे शो कर सकते हैं, जैसे हज़रत अबू बकर प्रॉफिट से हमेशा वफादार रहे। तो आज के दौर में हम अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट कर सकते हैं, सच एज finding them job opportunities when they become jobless. We can guide friends towards better choices, such as encouraging them to overcome harmful habits like drugs or gambling. तो हमारा दोस्त अगर कोई टेढ़े रास्ते पे जा रहा हो तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस करके उसको सीधे रास्ते पे लाने की कोशिश करें। Number three, we can help selflessly, such as teaching classmates or assisting friends with tasks, helping them out with their works. And that is how we can build a supportive community. And but through this, we will strengthen friendships, and through strengthening friendships, we will offer care and assistance, which will support unity in the society. तो ये हो गया हमारे पास हजरत अबू बकर से रिलेटेड दो पार्ट 20। एक मैंने कराया वेल्थ पे और एक मैंने पढ़ाया लॉयल्टी पे। लेट अस नाउ मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट कंपेनियन। हजरत उमर के दौर, हजरत उमर का रोल इन द लाइफ टाइम ऑफ द प्रॉफिट, क्वेश्चन नंबर 2, June 2015, outside Pakistan. So let's talk about him. So he was a person born in 584 and belonged to the noble tribe of Quraysh, especially the Banu Adil clan. His father was Khattab bin Nawfal and his mother was Antama bint Hisham. Umar was known for his strength and skills in wrestling, horse riding, and swordsmanship, and he was a successful merchant in Makkah. Initially, when the message of Islam started to get preached, he was one of the enemies of Islam. After hearing it from his friend Nuaym bin Abdullah that his sister and sister-in-law had converted, he eventually, मतलब ये उनके पास गए, उनके घर में चेक करने क्या हो रहा है, खटखटाया। इनके जो बहनोई थे वो अभी 10वें नंबर पे आएंगे, सईद बिन जैद। तो वो छुप गए, उनकी बहन ने उनसे बात करी। तो हज़रत उमर ने पूछा, क्या तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है? तो बोला, यस, सो व्हाट। तो फिर उन्हें अपनी बहन को पुश किया, जिससे उनके चेहरे पे निशान आया। तो बहनोई और उमर के दरमियान लड़ाई होने लगी। मगर उसके बाद उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि ऐसा क्या है कि मेरी बचपन की जिगरी बहन और वो इस मैसेज के लिए मुझे छोड़ने के लिए तैयार है। लेट मी गो एंड हैव अ लुक एट इट। और फिर जब उन्होंने सूरह ताहा की वर्सेस पढ़ी तो उनका दिल नरम हुआ और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली जाकर हुजूर के पास इस्लाम कबूल कर लिया। फिर आप ये बता सकते हैं कि इनका कन्वर्जन ऑफ इस्लाम है वो इस्लाम के लिए तकवीयत का बाइस बना। कैसे तकवीयत का बाइस बना? कि most of the Muslims started praying in front of the Holy Kaaba and surround the Holy Kaaba. It was only possible due to the acceptance of Islam of Hamza and Umar bin Khattab. Where you then talk about Yoga Para 2. Umar's acceptance of Islam made the Muslim community stronger. He publicly declared his faith in Kaaba, challenging the Quraysh. Hazrat Umar protected the Muslims from protection. He provided physical protection to the Prophet and the Muslims, allowing them to practice their faith openly. And he is one of those people कि जब वो माइग्रेट करके मदीना जा रहे थे हजरत उमर, तो उन्होंने लोगों से कहा कि जो अपनी बेटी को यतीम बेवा करा नहीं चलाना चाहता है उससे क्लिफ के पास आकर मिल ले। मैं जाके माइग्रेट कर रहा हूँ फ्रॉम मक्का टू मदीना, मैं देखता मुझे कौन रोकता है। मदीना लाइफ में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने सपोर्ट किया जब अजान का डिस्कशन हो रहा था, द कॉल टू प्रेयर। इनकी बेटी हजरत हफ्सा की प्रॉफिट से शादी हो चुकी है।
और ये सारी तो आपके सामने मौजूद है। असल में टॉपिक हल्का सा ड्राई है, मगर इसमें हम मार्किंग स्कीम्स या अगर हमारा हैंड आउट 1.3 स्ट्रॉन्ग है ना, लाइफ ऑफ द प्रॉफिट, तो इसमें गौर से देखोगे तो डायरेक्ट लाइफ इन मक्का और मदीने की बात ही उठ उठ के आ रही है। तो इसलिए इसको देख के इतना ओवरवेलम होने की जरूरत नहीं है। Hazrat Umar witnessed the Treaty of Hudaybiyah and participated in the conquest of Makkah. He helped win the Battle of Hunain and took part in the siege of Taif. And in Tabuk expedition, Hazrat Umar donated half of his wealth in Tabuk expedition. हजरत उमर को वाटर किया गया उनकी कैलिफेट के अंदर, और हुजूर हजरत उमर को बरी किया गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर में, आफ्टर द बराबर ऑफ हजरत अबू बकर इन मस्जिद नबवी. The Holy Prophet gave him the title of Al Faruq because he had the criteria to judge right from wrong. He could differentiate who is going on the right track and who is not. हजरत उमर ने एक लाइफ गुजारी स्ट्रेंथ, करेज, लीडरशिप की एंड पाइटी की थ्रू आउट द मुस्लिम स्टोरी. So this is regarding Hazrat Umar.